thankfully for some weird reason I was mentally prepared. मुझे Yeah, पता था yeah. कि हाँ ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला, टाइम I नहीं think you मिलने did वाला tell है. me your brother. इंटरनेशनल पंचायत बातें ग्लोबल दिल देसी. How are you? Good. How are you? I'm good too, Sonal. But again, thank you. इतने short No notice पे problem. agreeing to this. All Before, good. मतलब again, you're comfortable in Hindi, English, like जो भी है, just tell All me like good. for हाँ Hindi, हाँ English हाँ. common. ठीक है? ऐसा कोई हमारा वो हम्म नहीं है कि it can be, कोई भी language हम कर सकते हैं. Yep. All good. बाकी, how is Australia treating you so far? हाँ, यही चीज पूछा होता मे बी 2 महीने पहले तो माय आंसर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, ड्रास्टिकली डिफरेंट. Yeah. बट हाँ, थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर द बेटर. I think that's the beauty, right? कि हम मतलब मैं हमेशा ना अपने कोविड एक्सपीरियंस से रिलेट करता हूँ कि आई थिंक हम दोनों तभी मिले थे, राइट? एक एमजीएनटी सब्जेक्ट के लिए, राइट? हाँ हाँ हमारा हाँ था हाँ, दैट एमजीएनटी वाज वो द थिंग. कोविड टाइम्स में. एंड द टाइम वन. कॉन्वर्जेशन टाइम वन, राइट? एंड द कॉन्वर्जेशन जो हम उस टाइम पे करते थे वो completely डिफरेंट था. द मेन ऑब्जेक्टिव एंड गोल एट दैट पॉइंट वाज जस्ट टू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? एंड वहां से मतलब ऐसा रियलाइज नहीं होता है, बट आई थिंक ऑलमोस्ट 2 years होने वाला है मुझे. आई थिंक यस. सेम फॉर यू, राइट? ऑलमोस्ट हाँ 2 years हाँ इसी हाँ, से. और 2 में 2021. आए थे, 2022 में आए थे टू हम. में आए थे. हाँ, यस, आई बट वी केम ऑन स्टार्टेड इन. जनवरी 5th. हमने स्टार्ट अच्छा. 2021 में करा था. तो हाँ हाँ 3 साल हाँ. वैसे जर्नी हो गई है, तीन. लेकिन ऑस्ट्रेलिया आए 2 साल हो गया है. एंड समटाइम्स आई डू गो बैक टू दोस डेज एंड मैं फिर ऐसे सोचता हूँ, राइट, कि तब क्या सोचते थे. बहुत गालियां दी यार ऑस्ट्रेलिया को, ये नहीं कर रहा प्राइम मिनिस्टर, वो नहीं कर रहा, बॉर्डर नहीं खोल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. एंड सडनली एकदम बॉर्डर्स से खुले बॉर्डर्स खुले, एंड. हम यहाँ आए and see where we are. So to be यप. honest, I'm really very grateful um, to some decisions that I took at that time. Also, we say by God's grace चीजें वर्कआउट करी फेवर में. बट आज जहां भी है ऐसा बिल्कुल इमेजिन नहीं करा था 2021 में कि ऐसा होगा. सो आई थिंक दैट इज व्हाट, अगेन आई डोंट नो अबाउट ऑस्ट्रेलिया, बट आई एज्यूम कि बाकी सारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी जर्नी ऐसी ही होती है. यू एक्सपीरियंस, यू थिंक अबाउट समथिंग, बट जब होता है तो हाँ, completely तो अलग ही होता है. You never कंप्लीटली imagine. अलग ही रहता है. Yeah. एब्सोल्युटली. Once you दैट्स start व्हाई आई सेड experiencing. बिकॉज़. बट देन लेट मी टेल यू व्हेन जब हम लोग आने वाले थे, एवरीवन वाज लाइक हाँ बॉर्डर कब खुलेगा, हम जाएंगे कब. दे वर लाइक Right. वेटिंग. उसमें लाइक नहीं, तब तक बैठ लो चुपचाप जब तक नहीं खुल रहा. जब जाओगे ना तब हाँ, जितनी वाट लगेगी ना सबकी, फिर बिल्कुल. रोते बैठना. हाँ, लगी थी बिकॉज. मतलब बहुत आने के बाद बहुत लगी थी सबकी. बट थैंकफुली फॉर सम वियर्ड रीजन आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड. मुझे Yeah, पता था yeah. कि हाँ ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला, टाइम I नहीं think you मिलने did वाला tell है. me your brother, right? So, वो I think he was abroad already, right? Your brother, अब some. हाँ, या माय ब्रदर ही इज, मतलब ही इज बीन इन कनाडा फॉर Mm-hmm. क्वाइट अ व्हाइल. Mm-hmm. हाँ, उससे भी मतलब he didn't go to study, he went with the PR. Okay, okay. तो But does that uh, experience help कि मतलब कोई close already बाहर हो तो you are already prepared, वो help करता है मतलब how is it? थोड़ा बहुत डेफिनेटली Okay. डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प करता है. एंड यू गेट टू हियर थिंग्स लाइक अरे यू नो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ज्यादा डिफरेंस है नहीं एक्सेप्ट फॉर द वेदर एंड द Weather. हेमिस्फीयर्स ऑफ Yeah, कोर्स. yeah. बट लोग तो वही हैं, मोटा मोटी वैसे ही लोग हैं. दैट Hmm. सो या यू गेट टू हियर थोड़ी Makes बहुत sense. चीजें which was good. So अब क्योंकि हम बैकग्राउंड हम टच कर ही रहे हैं तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द बैकग्राउंड. सो इफ यू कैन जस्ट गिव योर जनरल बैकग्राउंड कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड इंडिया में अगर इफ यू हैव डन बैचलर्स का किस फील्ड में करी है एंड अगर कोई जॉब का एक्सपीरियंस था. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. Right. So I am from Odisha by birth, but my parents are settled in Bangalore. I have an elder brother who's almost a Canadian citizen, or is getting his citizenship. फिर मैंने पढ़ाई की इंडिया में, बैचलर्स की. आई स्टडीड मतलब मैंने बैचलर्स की इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म. 3 साल की थी वो. फिर then once I graduated, mind you, I had no intentions of coming to Australia. मुझे I'm like भैया वहां पे है, मुझे भी उधर जाना है. तो नेचुरली. मैं भी कनाडा जाने की सोच रहा था पहले. अच्छा. देन ऑस्ट्रेलिया का बस चीजें बदल जाती हैं या.
But go on. तो but what happened is Canada में masters करने के लिए they usually मतलब on an average the requirement is that you have a 4 years bachelor's degree Yeah. or 16 years of education, जो मेरे Hmm. केस में नहीं था, तो I dropped. तो उसके लिए कनाडा के लिए यूएस के लिए मैंने I took GRE, I took IELTS and everything, वो सब हुआ. And then one day I happened to go to one of these यूनिवर्सिटी के फेयर्स होते हैं ना हाँ बैंगलोर में, हुए थे बैंगलोर ऐसे ही में. कुछ. तो Hmm. that's where I went. वहां पे somebody I connected with my counselor. That's where I met her for the first time, and she did all my applications. सारे उन्होंने किया everything. तो हाँ, उस टाइम तब भी मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच नहीं रही थी. पहले she applied to a few universities in the UK. मुझे offers आया and I chose not to go because I had it in my head कि हाँ Brexit हुआ है अभी the economy is slowly falling down. Yep. मतलब जा रहा है, downward trend दिख रहा है. तो thankfully I didn't and I dodged a bullet. फिर she applied to other universities in Australia, not Okay. UoW, Okay. because मेरे दिमाग में ये था कि पहले ही मुझे ना I want to get into a financial management या core finance degree, but वो होने वाला था नहीं. When you apply to a financial management या finance related, numbers related degree from a media kind of a degree, which has got absolutely no connection with numbers, they यहाँ पे क्या होता है, you get an offer letter but it's conditional. Yep. Meaning you have to fulfill requirements like जैसे GT के requirements होते हैं, वो पूरे करने होते हैं. You have to write an SOP, जैसा SOP होता है अपना, वैसे ही पूरा लिखने होता है, and then you submit it. Yep. तो वो हुआ. I think Deakin and Latrobe से मुझे Yeah, Deakin आया था. Latro. Yeah, मैंने भी apply दोनों करा था. Latro मैंने apply करा था. Deakin तो नहीं. वहां से which one of these places में से मुझे आया था. I think it was an MBA finance degree, I don't remember. UNISA Oh, था nice वो university. Yeah. तुम्हारे पास मेरे पास बगल में बहुत पड़ोस अच्छी में. यूनिवर्सिटी. I think it's expanding. University Adelaide or University of, if you don't know, University of Adelaide and University of South Australia का merger हो रहा है. I think I'm correct, but मैंने news सुनी है कि अच्छा, इन दोनों का merger हो रहा है, and together they will form the they'll be biggest huge. university of Australia, because Uni Adelaide is Oh, so huge, and it's UNISA anyway is a also, GO8. yeah, It's GO8. anyway a GO8. So just imagine दोनों university combine करेंगे. I Actually, think it'll it's a be good. massive, yeah, it's a massive project. But again, coming back to the topic, I think you did mention on the consultant part, right, counselor? So if I'm हाँ. correct, वो IELTS ही था, sorry, IDP होगा, right? नहीं, that was not IDP. That was AECC Global, Okay. So I think which is सब लोगों को पता नहीं है. So वो how is different from IELTS and क्या charge होता है? Can you just explain on that? IDP से not, I mean IDP से ज्यादा कुछ अलग नहीं होता है. This is a smaller organization, Okay, which is probably why I got the extra attention from her. makes sense. Okay, तो IDP से बहुत लोग आए हैं, and सबका यही बोलना था कि भैया हमको तो मतलब they just ignored us, we had to run after them. But यहाँ पे उल्टा हुआ था. Okay, मतलब she didn't run after me per se, because but smaller organization है. हाँ, maybe I was fortunate because she's a person like that. Yeah, मतलब but वैसे but do इंसान they है वो. but do they charge you, like, I think No, IDP is they don't. something. Oh, nice. So it's They don't. exactly like IDP but more attention हाँ, because they want to gain that audience. हाँ. Okay, because And these मैंने people कभी are नाम नहीं based सुना out था. of these people are based out of Kalyan Nagar in Bangalore. Okay, so only in Bangalore or do they? I think they have, हाँ, दूसरे जगहों पे भी है उनके. मैंने लेकिन जितने जितने लोगों को रेफर करा है अपने दोस्तों को जिनको भी पढ़ाई करने जाना, I always referred them to the Kalyan Nagar वाला branch. Okay, but I think virtual भी लेते होंगे, right? Because of COVID, virtual भी Definitely, शुरू हो गया. definitely virtual ही हो रहा था उस टाइम पे. Okay, perfect. Yeah, because I think because मैंने सिर्फ IDP का नाम सुना था, so this is something new piece of information that I got to know today, that there is another organization called AECC, right? Full form पता है? कोई idea full AECC, form हाँ, क्या है? नहीं, I don't. Okay. They have a website. You can link the Yeah, website I नीचे in I the will do that. description box. Yep. So, Uh, just one more thing on that. इसी को expand करेंगे थोड़ा, because you said you applied UK, you applied Canada, and then you applied Australia. So मैं मतलब हाँ US जी, छोड़ देते, but US भी करा था कि नहीं? नहीं करा Okay. था.
Okay, करने so वाली थी, नहीं किया. okay. So because what I'm saying is like what I'm seeing is you applied almost like अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं या तो यूरोप आता है या कनाडा आता है ऑस्ट्रेलिया आता है ऑब्वियसली यूएस सो एक तरह से यू हैव अप्लाइड एवरीवेयर सो आई जस्ट वांट टू नो द माइंडसेट एंड द क्राइटेरिया कि हाउ यू चोज ऑस्ट्रेलिया कौन से प्रेफरेंस पे था हाउ अल्टीमेटली यू लैंडेड ऑन ऑस्ट्रेलिया and why you left Canada. I know you gave the reason for the Canada, but again, why the shift? Why not Canada? Why not UK? And why only Australia? Or was it just by luck कि हो गया Australia? नहीं, just by luck तो नहीं था. I would have still chosen Canada if I had a proper. Canada पे भी मैंने अप्लाई किया, but then she strictly told me कि तुम अप्लाई करोगे, तुमको ऑफर लेटर भी आ जाएगा, लेकिन वीजा के टाइम तुम्हारा रिजेक्शन होगा. Okay. बिकॉज ऑफ माई डिग्री. ठीक Okay. है. तो आई थिंक वी अप्लाइड फॉर अ उसी टाइम पे देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड कोनेस्टगा कॉलेज, क्वाइट पॉपुलर. Mhm. ठीक है. एंड वहां पे हमने अप्लाई किया फॉर, आई थिंक इट वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ सॉर्ट्स, आई डोंट रिमेम्बर. Mhm. लेकिन वो भी 2 साल की डिग्री थी. Okay. उसी टाइम पैरेलली शी अप्लाइड टू, माइंड यू, आई हैड अप्लाइड टू 8 प्लेसेस, In 8 जगह Canada. टोटल. नहीं, Okay. टोटल. Okay. Okay. Total इन 3 टोटल. countries में. मैं कहा आर्ट यूनिवर्सिटी कनाडा की nice. Okay. Makes sense. ठीक है. तो 8 अप्लाई किया, 8 में से ऑफर आया, लेकिन कंडीशनल ऑफर्स Okay. बिकॉज ऑफ माय बैचलर्स Mhm. इन मीडिया. तो यहाँ पे भी आ तो गया. शी वाज लाइक तुम करो अप्लाई, बट वीजा में रिजेक्शन बहुत चल रहा था उस टाइम पे. स्टूडेंट वीजा बहुत रिजेक्ट कर रहे थे. Are you referring to एंड सो Canada or UK? आई एम रेफरिंग टू कैनेडा. Okay. ठीक है. Hmm. तो वी डिडंट गो अहेड विद, प्लस इट वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, नॉट अ मास्टर्स डिग्री. पैरेलली उसी टाइम पे यूनिसा, आई थिंक यूनिसा से मेरा जो जीटी वाला जो था एसओपी, वो रिजेक्शन वो रिजेक्ट किया गया. Hmm. आई वाज हार्ट ब्रोकन. ठीक है. आई वाज लाइक गया, मतलब सत्यानाश, अभी क्या Okay. करूं मैं. तो शी इज लाइक डोंट वरी. Mhm. उस फिर यहाँ पे है न्यूकासल. Yeah. Yeah. न्यूकासल और यूओडब्ल्यू की रैंकिंग्स आर ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे. Okay. एंड माइंड यू, आई वाज वन ऑफ दोस पीपल जिनको रैंकिंग से बहुत फर्क पड़ता था. Okay. मैं ऐसे ही कहीं पे नहीं अप्लाई करती थी. Okay. You ठीक used to है. look at the rankings. आई यूज्ड टू लुक एट द तो रैंकिंग. कौन सी रैंकिंग you used to refer? QS ranking या कौन क्यूएस सी? देखती थी. फिर व्हाट इज द अदर वन, अदर पॉपुलर थिंग, आई फॉरगॉट व्हाट इट्स मेरे को QS का ही पता है. कॉल्ड. शंघाई का एक कुछ है, आई डोंट Okay. रिमेम्बर, आई I don't थिंक. know. मैंने रैंकिंग को क्राइटेरिया कभी नहीं दिया. मुझे QS का पता था बट हाँ. हाँ, क्यूएस पे देखते थे. मैं 3-4 रैंकिंग्स देखती थी. आई वाज Okay. फोकस्ड Oh, ऑन रैंकिंग. nice. ठीक है. अ, तो देन शी इज लाइक डोंट वरी, हम लोग ना यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड में अप्लाई करेंगे. Okay. रिमेम्बर, शी इज लाइक रिमेम्बर, डोंट वरी, यू वांटेड जियो8, तो हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड में अप्लाई करेंगे. बट यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड में एक मास्टर्स, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप वाला, it was costing me around 45 to 50 It's lakhs. very expensive. Uni Adelaide is so expensive. I know. Obviously it's a जियो8. यहाँ पे उल्टा GO8. है ना, कि Yeah. जितनी इनकी रैंकिंग ज्यादा होती है, उतनी उनकी फीस भी ज्यादा होती है. Yep. एंड देन आई वाज लाइक नहीं, 50 लाख तो मैं नहीं स्पेंड कर रही. आई एम नॉट डूइंग दैट. I think So she's like, after doing a master's over here, मैंने realize करा, I don't know about you, कि it doesn't matter which university you graduate from. Like, is your take the same or you still think differently? मेरा take ऐसा है कि it doesn't matter. मैंने सोचा नहीं है ऑनेस्टली, Okay. बट आई ऑलवेज, मतलब पहले भी एंड आफ्टर ग्रेजुएटिंग एज वेल, I feel very honored to be a product of UoW. Yeah, same here, same here. Same. I mean, there are so many things that I can suggest they can improve on the course, but I feel overall learning wise, I learned a lot because I think the learning that you gain is actually, you can apply that practically. चाहे फिर वो assignment लिखना ही हो, it's actually used in the company that you work Yes, for. the assessments. Oh, is it? Okay, I haven't gone through that Okay. yet. Okay. Maybe I will in the future. Yep. But assessments, ऐसे ही assessments नहीं देते थे जो आप, you can just go through random stuff and Yep, just yep. make an assessment and submit. That was never the case. Yes. Assessments used to be very intense and very practical also. Yep. Yeah. Very application based.
100%. And they gave us उसके लिए they gave us access to websites like say Refinitiv हुआ और Yeah, research yeah, yeah, yeah. So many. वो दे IBIS देते. World हुआ and all IBIS of those World, yeah, things. the research. So very real assessments. Yes, yes. So हाँ, again हम कौन से टॉपिक पे थे कि how you New- landed. हाँ, landed That's in the beauty, UoW. right? हम कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, so it's all good. But yeah, टॉपिक पे So लाऊंगा तो फिर कैसे हमने UoW अप्लाई आया? हाँ, हाँ सॉरी तो फिर हमने अप्लाई किया टू न्यूकासल एंड UoW okay, and I chose UoW because of the double degree, yeah, everyone double did that. master. Same here. ठीक है, I was like 2 साल में एक तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है कि मैं सेकंड डिग्री अपना चेंज कर पाऊँ एंड आई हैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन माय माइंड. मैंने पहले तो लिया था COE इंटरनेशनल बिजनेस का. Okay. So which one was your जबरदस्ती first जान degree? एंटरप्रेन्योरशिप, Okay, इनोवेशन एंड entrepreneurship. एंटरप्रेन्योरशिप. Okay. फिर मैंने मतलब आई टोल्ड कि हाँ बात जाने के बाद आई चेंज इट टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. Mm-hmm. और मतलब आई वाज वेरी कीन ऑन डूइंग अकाउंटिंग टाइप का कुछ भी. Yep. या फिर मास्टर्स ऑफ आई थिंक अप्लाइड फाइनेंस है अपने यहाँ, मैं Yeah, उसमें भी yeah. इंटरेस्टेड Master थी. of Applied Finance. Yeah. हाँ, लेकिन उनमें क्या होता है ना, द योर फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स डिफर. Yes. तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करने, एक्स्ट्रा टाइम आपका जाता है. Mm-hmm. तो आई वाज नॉट रेडी टू डू दैट. Okay. तो इसलिए मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके खत्म किया. Okay. So first degree was entrepreneurship, and the Entrepreneurship. second one was your financial management. Yes. But I think dual masters, if I'm correct, right, सबका ये था. मैंने भी dual masters degree करा UoW से, and the other one was always the cost point. It was way cheaper. That's what I found. कि compared to Yes, the for university, it was very yes, cheap, right? it was for 25 the लाख में 25 ranking. लाख में 2 masters की डिग्री मिल रही है, दो right? मास्टर्स की डिग्री मिल और रही है. सबको स्कॉलरशिप बांट रहे थे. आई थिंक वी आर द लकी ones, so we should be grateful. कोविड की Very वजह से well. बहुत गलत भी हुआ है, and yeah, we can't help like, but I think अच्छा भी हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इट was kind of a gift for me in terms of like, because UoW scholarship बांट रहा था. If you think like that, right? I think जिससे भी Yes. बात करिए सबको 40% या 40 समथिंग मिला ही मिला है, बिकॉज एक तो नॉर्मल 30% सबको देते थे, ऊपर से घर से राइट ऑनलाइन एजुकेशन करने के लिए Yeah. वो एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप दे रहे थे. So Yeah. it used to come around, I don't know, 33% per subject, 37%. I think 37%. I'm not too sure, but मुझे आई थिंक 25% तक मिल रहा था. मुझे खैर कुछ खास याद नहीं है. okay, But I think that yeah. is what I But I was think getting. scholarship सबको मिला था. सबको जितना बर्सरी सबको, बर्सरी सबको मिला था. जिससे And मेरी they बात called it हुई, a bursary. yeah, सबने बोला it bursary, was not even a scholarship. They used to yeah, call it a bursary. There's a yeah, difference. Bursary yeah. तब मिलता है मतलब जैसे भी कोविड वाला सिचुएशन हुआ. Yes, yes. That's why तो I say that. bursary is more of a support Yes, ऑफर करने का तरीका. yes, yes. Whereas scholarship is more to do with Oh, your okay, academics या फिर okay. आपने. I think that's how I see it. Understood. Yeah, I makes can be sense. wrong. I think मेरे साथ क्या हुआ था? I got a scholarship, and on top of that, I also got bursary. अच्छा. Yeah, तो वो था. या कुछ कुछ जीनियस लोग होते हैं. I think सबके इसमें होते हैं. genius नहीं, but जिससे मैं मिला हूँ, उन सबको ये हुआ था. But अच्छा. maybe I don't know. I don't think so. Like, my application was strong enough. But do you have any experience of working in India? नो नो. So maybe बिकॉज जैसे that. ही कोविड खत्म हुआ, Mhm. जैसे ही कोविड खत्म हुआ, सॉरी नॉट खत्म हुआ डूड, शुरू हुआ That, हाँ, 2019 2020 में हुआ 20 तो में वो शुरू हुआ. 2000 हाँ शुरू हुआ. 19 से पहले मैंने अपना GRE और IELTS वगैरह खत्म कर दिया So when did you finish your दिसंबर bachelor? में. 2019 2019. Which month? अप्रैल. April. But you didn't work in that time, right? You started. नहीं You नहीं. were very sure that you want to go for the masters. I was very sure and also the fact that मुझे मीडिया में काम नहीं करना था. Oh, okay. Specifically in India, I Mhm. did not want to get into the industry. So maybe I think जितने भी experience वाले थे शायद उन्हें वो scholarship दे रहे थे, but I don't know. But I think again the lucky ones कुछ भी मिला हमें amount वो कम था. Definitely. So UoW Definitely. happened by chance. It was not your first preference, if I'm correct. Yes. Okay. Yeah, it was not my first chance. First like what do you say? Preference. Option preference नहीं था, but I think there was the other university, but again I got that regional thing. उसकी वजह से मेरा UoW हाँ. first preference बन गया, and then the master's degree option. अच्छा. उसकी वजह से मेरा first preference बन गया था. पहले नहीं था, बाद में बना. क्योंकि वो था कि regional area है ना, वो So attract where else करा. had you applied? I applied RMIT.
I applied Okay. Latrobe, I applied Hmm. Deakin. So again, what I'm saying is your criteria, like you said, that QS ranking, my criteria was looking at the course. So again, मैंने भी ranking देखा था. I won't say ranking मैंने नहीं देखा, but what I did the ranking based on the course. Hmm. तो Course based, कोर्स subject based बेसिस rankings. सब्जेक्ट बेसिस रैंकिंग बिकॉज Hmm. मेरे को ये था कि आई डोंट मेरे लिए मैटर नहीं करता यूनिवर्सिटी का स्टैंड करती, मेरे लिए मैटर करता है जो कोर्स पढ़ा रहे हैं उस कोर्स में रैंकिंग क्या आ रहा है हाँ यूनिवर्सिटी का. हाँ, तो डेफिनेटली तो डेफिनेटली, मैंने यस. रैंकिंग वहां करा था, उसमें यूओडब्ल्यू नीचे था उस रैंकिंग में. द अच्छा. RMIT, लाट्रोब, आई थिंक वी से विक्टोरिया, आई डोंट नो, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द नेम, बट वो यूनिवर्सिटी डीकिन थी. यूओडब्ल्यू शायद फोर्थ समथिंग फिफ्थ नंबर पे था, बट देन इट बिकेम माई फर्स्ट प्रेफरेंस. The reason first is double masters. Second is regional area, वो 3 साल का जो बेचा था ना, हमें 3 साल का एक्स्ट्रा वर्क परमिट मिलेगा, वो it was cheaper compared to the university. And I think one other reason was my fear, जो मैं आगे अब किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, my fear of running away from coding. तो मैं हूँ इंजीनियरिंग अच्छा. बैकग्राउंड से, बट मैंने कोडिंग से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है. एंड बिजनेस एनालिटिक्स डिग्री में मैंने सोचा कि यार कोडिंग नहीं करना, कोडिंग के अलावा जो भी पढ़ा रहे हो पढ़ लो. बाकी यूनिवर्सिटी में हैवी कोडिंग था. सो इट वाज माय फियर. अगर मेरे को कुछ समझाना हो अपने पुराने सेल्फ को, तो मैं बोलूंगा डोंट रन अवे, फाइट, एंड सब हो जाएगा. बट नो रिग्रेट्स. अभी आई एम कोडिंग, सो दैट्स हाउ लाइफ Oh, टर्न्स finally. अराउंड. या यू हैव टू डू दैट. वो मेरा लाइक वो बिकॉज आई डोंट हैव एक्सपीरियंस and मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाया. And the whole idea why this thing started is just because to transfer information. अगर तब मुझे किसी ने गाइड करा होता, समझाया होता that it doesn't matter, no matter how much you run, you have to code in this industry, in this analyst industry. अगर हाँ. किसी ने तब ये समझा दिया होता तो शायद मेरा डिसीजन आज कुछ हो रहा था. बट अगेन नो रिग्रेट्स. लाइफ अपने आप कुछ लेसन सिखाती है, एंड मैंने वो सीखे. आई हैड टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स. अगर यूनी में ऐसा कोई कोर्स चूज करता जिसमें वो यूनी सिखाती, सो प्रॉब्ली थिंग्स माइट हैव बीन इजियर, डिफिकल्ट, अगेन डोंट नो, हु नो, राइट? So no regrets. जो है, I'm very grateful. I'm very happy where I am today. But yeah, it is what it is. But you said that you wanted to do something, and coming back to you, you said you wanted to do something in finance. Yeah. And then from finance, choosing entrepreneurship as your first preference and finance as your second preference for the masters. Yes. Why that switch? Yes. Yeah. I'll tell you And why. why entrepreneurship? Uh, on why entrepreneurship, there are multiple facets to this. Mhm, पहले तो मुझे पता था मुझे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलने वाली है किसी भी कोर फाइनेंस डिग्री में. mhm. Okay. Yeah. So this sort of acted as a pathway for me. Okay. That is the reason why I chose UoW. Okay. It was offering me an easy pathway. लो तुम्हें हम दे रहे हैं, तुम Yeah. लो, grab it. तो I just Yeah. grabbed. तो एक चीज वो था. Why entrepreneurship? Because मुझे पता है at some point in time I am going to have my own venture. Mhm. I know that for a fact because I cannot be in a corporate for a very long time. ये You मुझे can't be पता. a corporate slave. That's a term that I industry. cannot be one. Not for अभी तो नहीं लग रही है slavery, But in the लेकिन longer at run. some point in the longer run मुझे feel होगा. ये मुझे Yes. पता है अच्छे से. Okay.